Today, I am going to discuss about how do organisms reproduce. How do organisms reproduce? Please give your attendance. Now, who are present, put the message. Ashok, Pratishtha, Beth, Ashish, give your attendance. Okay. Now starts with what is reproduction? Today I am going to study how do organisms reproduce. The organisms, all living organisms reproduce by various methods. Several organisms reproduce by using several methods. At first, before the process of reproduction, we have to know what do you mean by reproduction. What do you mean by reproduction? Reproduction mane kon define? Reproduction, it is a process in which all living organisms produce offspring or young ones in their kind. एका भड़िया सब लिविंग ऑर्गेनिज्म माने निज भड़िया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करबा को कहंती रिप्रोडक्शन बाय द प्रोसेस. Reproduction is a process in which new organisms are produced from existing organisms, or new individuals are produced from existing organisms. Means reproduction is a process in which new organisms are produced from existing organisms. Here, new organisms are produced from existing organisms. What do you mean by who are the new organisms? Suppose our parents are existing organisms and we are new organisms. We are produced
from our parents means new organisms are produced from existing organism. Here existing organism means our parents. We are produced. We means new organisms are produced from existing organisms. The new individuals जो माने तैयारी होचंती सामान्य तकर पेरेंट्स जदि तैयारी होंती बा प्रोड्यूस होंती तले से प्रोसेस हला रिप्रोडक्शन प्रोसेस अब सेम स्पीशीज सेम काइंड ऑफ स्पीशीज माने निजर न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते बुझेला देखो again but there are how reproduction is necessary. Reproduction is necessary which ensure the continuity of a species on the earth. गोटे अर्थ रे गोटे स्पीशीज कंटिन्यू करिक रहिबो स्पीशीज को कोन करबो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज ऑन द अर्थ. सपोज our parents, if our parents do not give us, do not birth us, suppose our parent हमको धर जन्म करि न थांते तले सेठी आपस जो पेरेंट्स करो और जो नेक्स्ट जनरेशन आउ थांते कि जदि टोटल होल ह्यूमन बीइंग्स गोटे जनरेशन तापर आउ के जदि कोनसी रिप्रोडक्शन न करते तापर आउ ह्यूमन बीइंग आउ से जो ह्यूमन जो होमो सैपियंस स्पीशीज थी सैपियंस स्पीशीज जब अर्थ रे एग्जिस्ट करि परिबो कि करि परिबो तले से बली जदि हम गोटे फैमिली रो जने जदि पेरेंट्स तार कोनसी से रिप्रोडक्शन न करे ताले से फैमिली तो तापर से माने आफ्टर डेथ से माने ओल्ड हला पर अल्टीमेटली डेथ करिवे डेथ हला पर ताको फैमिली आउ के रहिले कि के जदि सही बले टोटल होल ह्यूमन बीइंग्स जदि रिप्रोडक्शन न करिवे ताले इज इट पॉसिबल टू सर्वाइव द ह्यूमन स्पीशीज ऑन द अर्थ. नो. ताले ह्यूमन स्पीशीज गोटे स्पीशीज ह्यूमन से जदि अर्थ रे कंटिन्यू करिवा को हेले से को प्रोसेस रे करबो ना reproduction is the only process who ensures the continuity of a species on the earth. केवल अर्थ रे गोटे स्पीशीज को कंटिन्यूटी करि पारे के ह्यूमन बीइंग्स बुझियो जे तब असला there are two types of method in which living organisms reproduce. There are two types of reproduction method in which living organisms reproduce. First one is asexual reproduction and second one is sexual reproduction method. So what do you mean by asexual reproduction method? Asexual means absence of sex cells. The new organisms are produced from single parent. Where without involvement of sex cells. ता माने एठी जो इंडिविजुअल गुडी को रिप्रोड्यूस हेबे यंग वंस और बेबी माने जो प्रोड्यूस हेबे समान गोटे सिंगल पेरेंट रु तयारी हेबे. से सिंगल पेरेंट को आइदर कोआ जाय पारे मदर सेल और पेरेंट सेल. केवल गोटे सिंगल पेरेंट सेल रो न्यू ऑर्गेनिज्म गुडी को प्रोड्यूस हेबे. एठी both sex cells are not involved. Both sex cells means both sex cells are not involved in asexual reproduction. Are not involved means male sex and female sex are not involved in asexual. Not involved. Only one cell, only one parent is involved for the production of young ones by the process of asexual. In asexual reproduction, only one parent reproduce its young ones. Asexual reproduction ने केवल गोटे सिंगल पेरेंट तार young ones गुडी को प्रोड्यूस करे. ताले से माने क्यों माने करते asexual like microorganisms and simple plant and animals, simple plants and animals, etc. like fungus
rhizopus fungus, bread mold जोटा कहते these organisms show the asexual reproduction. So there are several types of asexual reproduction which show the different types of organisms. Like suppose amoeba shows binary fission process. Fission is a asexual reproduction process. Similarly, planaria fragmentation, then rhizopus fungus to bread mold, spore formation, budding, hydra and yeast. Budding is a type of asexual reproduction which show by hydra and yeast, etc. Also vegetative propagation. Vegetative propagation is a asexual reproduction which shows bryophyllum plant and rose plants. In rose plant is a flowering plant whose stem is the vegetative part. In the rose plant, there is only one parent plant which is stem. Stem is the parent plant. From the stem of the rose plant, a new rose plant arises. So that is this process is called vegetative propagation. Vegetative propagation means the part of a plant. The part of a plant where a new individual arises. Suppose in a rose plant गोटे पार्ट है तार स्टेम से स्टेम रो आ गोटे रोज प्लांट तैयार हो आ गोटे ब्रायोफाइलम कहली ब्रायोफाइलम रो तार सब एबेला बाहर थबो रूट्स बढे एई तार पुनी नुवा ए लीव्स गोटे पार्ट तार ए वेजिटेटिव पार्ट रो आ गोटे नुवा ब्रायोफाइलम प्लांट हो तले ब्रायोफाइलम प्लांट गोटे मल्टीसेलुलर प्लांट but it shows asexual reproduction. Generally, unicellular or simple organisms shows asexual reproduction like amoeba, planaria, rhizopus fungus, bacteria, yeast, hydra, spirogyra, etc. Then, sexual reproduction. What do you mean by sexual reproduction? In sexual reproduction, new individuals are arise from two parent cells or two parents. Two parents means the involvement of two sex cells. One is male sex cell and another is female sex cells. Female sex cell. In the sexual reproduction, two parents of different sex. Two parents of different sex are involved. Two parents of different sex means male sex and female sex both are involved in the sexual reproduction. So in sexual reproduction the koibo and a new individual is produced. A new individual is produced from two parents. Here the involvement of both sex cells are involved in this process. In sex and female sex are present in the sexual reproduction. Suppose human beings, cow, other animals also exhibit sexual reproduction. In sexual reproduction, the ability of these animals or living organisms which have both two sex cells or two gametes, but a male gamete and female gamete. Female have female gamete. Then the fusion of these gamete or these sex cells to form a new cell that is called zygote. Sexual reproduction जो animal माने करते समानतर दीटा sex cell थाए गोटे male sex और गोटे female sex. से male sex by male gamete और female gamete समान जतले fuse हे जानती by the process of fertilization आ गोटे नुआ cell तैयार हुए तो कौनसी zygote. Then the zygote grows and becomes an organism. A zygote ta body ki gote amo bra complete organism.
तो एबे बुझिबा मेल सेक्स मेल गैमेट और फीमेल गैमेट रो कोन हुए ना फ्यूजन हुए बा फर्टिलाइजेशन है कि कोन जे हुए जाइगोट तापरे जाइगोट ता मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिसिला परे हो then this zygote is grows up and converts into an organism तापरे जाइगोट ता बढ़ी के आमे गोटे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होबा तला आमे तो ऑर्गेनिज्म के हेले कोठु आसले दीटा पेरेंट्स रो आसले मेल एंड फीमेल तला इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन two parents are involved or two parents of different sex are involved clear तापरे बे आमे आसीला asexual reproduction का types तो इन asexual reproduction को माने शो करंती पढितले आमयबार बाइनरी फिजन फिजन प्रोसेस ता आगे पढिबा asexual फर्स्ट फॉर्म पढिबा फिजन देखो asexual रो फर्स्ट पार्ट पढिबा फिजन ए फिजन होची टू टाइप्स गोटे हला बाइनरी फिजन आ गोटे हला मल्टीपल फिजन बाइनरी फिजन ने किए करे ना इन बाइनरी फिजन आमोइबा रिप्रोड्यूस बाइनरी माने बाई माने टू गोटे आमोइबा देखो सी बाइनरी फिजन ता आगे पढौची बाइनरी फिजन ने कोन बे सपोज हियर इज आमोइबा हियर इज द न्यूक्लियस ए गोटे आमोइबा रु दीटा आमोइबा डॉटर सेल आसे ता दीटा ऑफस्प्रिंग डॉटर सेल को पिले ऑफस्प्रिंग कहती बुझेला डॉटर सेल को कोन कहती ऑफस्प्रिंग तले जो दीटा डॉटर सेल ताई बडे एकाठी होबो दीटा आमोइबा तयारी तमना ये पैरेंट आमोइबा स्प्लिट्स इनटू टू डॉटर आमोइबा सेटा को कहती बाइनरी फिजन माने स्प्लिट अप एठी गोटे आमोइबा स्प्लिट अप है कि दीटा बाइनरी फिजन माने टू पार्ट्स रे स्प्लिट हो गेला तो बाइनरी फिजन पाला ताले बाइनरी फिजन ता केवल आमोइबा करे सेला मल्टीपल फिजन किए करे प्लाज्मोडियम गोटे पैरासाइट ता विषय पचर पडिबा आगे आमोइबा विषय पडिबा देख असो प्रतिष्ठा ओम किछ डाउट अछि आशीष एनी डाउट देखो एबे आमोइबार बाइनरी फिजन टा को देखो आमोइबा फर्स्ट काम करला ता सेल टा को जो न्यूक्लियस टोटल आमोइबार प्रोसेस टा को देखो जे केमिति बाइनरी फिजन है कि गोटे आमोइबा केमिति दीटा आमोइबार कन्वर्ट देखो एटी आमोइबार ये हला कोन पेरेंट्स ये हला पेरेंट आमोइबा ए पेरेंट आमोइबार एटा हला न्यूक्लियस एटा गोटे कंप्लीट आमोइबा सेकंड स्टेप रे कोन करला तार न्यूक्लियस टा लेंथनिंग हे गेला ए जो न्यूक्लियस टा सेकंड स्टेप रे कोन हेला एबडा लेंथनिंग हे गेला एटा न्यूक्लियस टा एबडा तिला सर्कुलर हे कि एटी कोन हेला न्यूक्लियस टा लेंथनिंग हे गेला केस रे कोन हला से न्यूक्लियस टा लेंथनिंग है कि न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स से जो न्यूक्लियस टा थर्ड रे कोन हला दीटा पार्ट है एठी गोटे पार्ट है गेला न्यूक्लियस एठी गोटे एटो लेंथनिंग है फर्स्ट ए न्यूक्लियस टा एटा हला न्यूक्लियस ए न्यूक्लियस टा लेंथनिंग है कि तापर थर्ड रे कोन हला दीटा पार्ट है गेला से न्यूक्लियस टा गोटे न्यूक्लियस लेंथनिंग है फर्स्ट से लेंथनिंग है कि दीटा न्यूक्लियस है तापर फोर्थ स्टेप रे से न्यूक्लियस जेतले डिवाइड हे गेला तापर दीटा कोन हला से ता से तो साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो एटी कोन हला न्यूक्लियस डिवाइड हिची तापर देखो साइटोप्लाज्म केमिति डिवाइड हिची एटो आस्ते आस्ते डिवाइड होला देखो ये गोटे पार्ट रहला ये गोटे पार्ट साइटोप्लाज्म हेला तापर लास्ट स्टेप रे से पूरा कंप्लीट अलग है जो ये गोटे कंप्लीट अलग है यार गोटे न्यूक्लियस रहला एटा तो साइटोप्लाज्म रहला एठी यार न्यूक्लियस रहला ता साइटोप्लाज्म एठी रहला एठी कोन हला टू न्यूक्लियस अछि किंतु गोटे साइटोप्लाज्म भीतर दीटा अछंती एठी कोन हला साइटोप्लाज्म रे डिवीजन हला एठी हला
डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एटा हला डिवीजन ऑफ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एठी साइटोप्लाज्म तार अलग आगला कार ये न्यूक्लियस सहित ए साइटोप्लाज्म रहिला ये न्यूक्लियस सहित ए साइटोप्लाज्म रहिला एठी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म occurs then two cytoplazms are separated from each other ताले ये गोटे कोन हेला अमोइबा हेला आ गोटा अमोइबा अलग हेला ताले दीटा डॉटर सेल पाइले ना देखो लुक एट अगेन फर्स्ट गोटे पेरेंट अमोइबा थला से पेरेंट अमोइबा रे तार न्यूक्लियस टा कोन हेला इलोंगेशन हेला लंबा हेला से न्यूक्लियस टा पुनी डिवाइड हेला एठी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हेला किंतु गोटिए साइटोप्लाज्म अछि तापर स्टेप रे कोन हेला न्यूक्लियस तो डिवाइड हेतला ता सहित तार साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हेला तापर पुनी कंप्लीटली अलग दीटा हेला ताले गोटिए पेरेंट रु हमें ए दीटा कोन पाइले डॉक्टर अमोइबा पाइले ताले गोटे अमोइबा स्प्लिट हेकी बा ब्रेक हेकी दीटा डॉक्टर्स अमोइबा पाइले ताले सेत में अमोइबा रे जो फिजन को कहते बाइनरी फिजन ताले अमोइबा सोच asexual reproduction by binary fission then बुझेला बे प्ले ताले बाइनरी फिजन माने कोन ना बाइनरी माने बाई माने 2 फिजन माने स्प्लिट जदी गोटे पेरेंट सेल स्प्लिट हे की दीटा डॉटर सेल प्रोड्यूस करे ताले ताकू कहबा बाइनरी फिजन ताले बाइनरी फिजन में के शो करला के अमोइबा सेबला आउ की अछंती ना बाइनरी फिजन में कहबो देखो तापरे तुमरो एनसीईआरटी बहिरे देखिबो बाइनरी फिजन रे आउरी थिबो पैरामेशियम भी थिबो लीशमानिया थिबो लीशमानिया बाइनरी फिजन रे के थिबो लीशमानिया पैरामेशियम amoeba these are produced these three organisms produced by binary fission short question asibo tale leishmania shows which type of asexual reproduction binary fission paramecium also binary fission then multiple fission clear multiple mane many parts split into many parts तले when देखो ये गोटे प्लाज्मोडियम अछि कोन अछि मल्टीपल फीचर टा के शो करे प्लाज्मोडियम होची गोटे मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम टा गोटे कोन मलेरिया पैरासाइट which shows the asexual reproduction which type of asexual reproduction na multiple fission ताले जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट अछि तार केमिति रिप्रोडक्शन हुए देखो प्लाज्मोडियम पैरासाइट रे तार एठी गोटे न्यूक्लियस अछि कार प्लाज्मोडियम रो से केमिति गोटे प्लाज्मोडियम में जो पेरेंट सेल ता अछि एही पेरेंट सेल ता केमिति डिवाइड हे कि मेनी मोर प्लाज्मोडियम रे कन्वर्ट हो जदी ये स्प्लिट हे कि बहुत गुडा प्लाज्मोडियम रे कन्वर्ट हो ताले ताको कहबा मल्टीपल फिजन अमोइबा स्प्लिट हे कि दीटा अमोइबा उतरा तब तो बाइनरी फिजन कहथले सिमिलरली ये मल्टीपल फिजन होची प्लाज्मोडियम splits into many more daughter प्लाज्मोडियम ताले गोटे पेरेंट प्लाज्मोडियम से स्प्लिट हे कि बहुत गुडा जदी डॉटर प्लाज्मोडियम कन्वर्ट करंती ताले हमें ताको कहबा मल्टीपल फिजन प्रोसेस तो देखो एटा हला तार सेल ए पोर्शन ता तार हला न्यूक्लियस पोर्शन कारण प्लाज्मोडियम से कोन करला एठी मेनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हेला सेकंड स्टेप रे या भीतर जो मल्टीपल फिजन है कि यार भीतर बहुत गुडा सेल रहला एई बेले ए गोटे सेल थिला एटा ता भीतर सेवरल सेल हेला गोटे सेल तो कोन हेला मेनी डॉटर सेल कन्वर्ट हेला गोटे पेरेंट सेल रो मेनी डॉटर सेल ये गोटे डॉटर सेल ये गोटे डॉटर सेल ये गोटे डॉटर सेल तारे डॉटर सेल गुडियो कोन हला यार जो थिला कोडा जो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन ये रप्चर हे गेला रे एमान सब अलग अलग है कि बाहर गेले कोडा
ता स्टेप रे देखो एगुला सेवरल कोन अछंती प्लाज्मोडियम सेल थिले एमान आस्ते आस्ते बाहर की पड़े एगुडी कोगुडी को ए प्लाज्मोडियम सेल गुडी को ए जो प्लाज्मोडियम ये गोटिए पेरेंट सेल ये डिवाइड हो गेला सेवरल प्लाज्मोडियम सेल एई सेवरल प्लाज्मोडियम सेल गुडी को जेतले ये रप्चर हो गेला तार सिस्ट एटा कोनती सिस्ट रप्चर होला पर से इंडिविजुअल प्लाज्मोडियम सेल गुडी को बाहर की से माने इंडिविजुअल ग्रो करी की प्लाज्मोडियम रे कन्वर्ट होले बुझला तले एठी गोटिए प्लाज्मोडियम रे सेल सेवरल प्लाज्मोडियम सेल रे कन्वर्ट होले फिजन हला स्प्लिट हेगी सेही प्लाज्मोडियम इंडिविजुअल सेल गुडी को कोनले रप्चर करी बाहर को जाई की से माने इंडिपेंडेंटली ग्रो करी की सेही प्लाज्मोडियम हे गेले बुझला रे तापर आसो ओम एनी डाउट आसो ओम प्रतिष्ठा देखो नेक्स्ट जदि आउ कर डाउट अछि मेसेज करो अन्य पिला के जॉइन करछो तब रसो ये गला मल्टीपल फीचर तापर पढ़िया बॉडिंग इन हाइड्रा देखो बॉडिंग इन हाइड्रा बॉडिंग लगो बॉडिंग के शो करे बॉडिंग शो करे हाइड्रा और ईस्ट पहले ईस्ट बा हाइड्रा जो बॉडिंग शो करती ताको देखो बॉडिंग इन हाइड्रा रे कोन बे हाइड्रा तो फिगर जानछ देखो एटा हला गोटे पेरेंट हाइड्रा एटा हला पेरेंट हाइड्रा ए पेरेंट हाइड्रा रो तार गोटे बॉड बाहरिबो बॉड माने गोटे पार्ट बाहरिबो प्रोजेक्शन गोटे प्रोजेक्शन ग्रोथ बाहर थो ता कोनते बॉड से बॉड रो केमिति से एट गोटे जस्ट गोटे ग्रोथ वाला प्रोजेक्शन एटा कोनते बॉड ये जो प्रोजेक्शन टा बाहरला एटा कोन कहते बॉड बुझल ये जो हाइड्रा रे हम देखुतंती एटा हला तार बॉड यही बॉड टा कोन करबो ग्रेजुअली डेवलपमेंट बुझला ये हला गोटे तापर ये कोन हबो ये एठू सेपरेट हे जिवो न्यू हाइड्रा का कोन हबो सेपरेट एटा गोटे पेरेंट हाइड्रा यही पेरेंट हाइड्रा की रिप्रोडक्शन करबो बाय द प्रोसेस ऑफ बॉडिंग बॉडिंग इज ए पार्ट ऑफ अ प्लांट व्हिच इज द आउटर ग्रोथ ऑफ इट्स बॉडी पार्ट एटा गोटे ग्रोथ बा प्रोजेक्शन यही बॉडी पार्ट बाय जो प्रोजेक्शन बा ग्रोथ हे छि एटा कोनती बॉड यही बॉड टा कोन हबो ना डेवलपमेंट की आ गोटे न्यू हाइड्रा हबो नुआ हाइड्रा हला पर से कोन हबो तापर स्टेप से सेपरेट ही जोता ता पेरेंट थारु तार डॉटर बा तार यंग वंस ता एटे पूरा कंप्लीटली अलग है बुझला ये जो हाइड्रा टा अब ये पेरेंट से तो आगे के रहिबो बुझला ये पूरा सेपरेट हे जो तले फास्ट गोटे पेरेंट हाइड्रा अछि ए पेरेंट हाइड्रा एडी तार कोन अछि प्रोजेक्शन अछि
बा ग्रोथ अछि एटा कोनते बर्ड एई बर्डटा तापर स्टेप रे ग्रेजुअली कोन कला ग्रोथ करी करी डेवलप हला गोटे न्यू हाइड्रा रे कन्वर्ट हला तापर से कोन हला जत पूरा बढ़ी गला सेउडी सेटा पेरेंट थारु सेपरेट हे से कोन कला निजे बढ़ी की गोटे न्यू हाइड्रा हे गला तले जो हाइड्रा जो प्रोडक्शन कला रिप्रोडक्शन एठी कोन दीटा सेक्स सेल दरकार हला नो केवल गोटे पेरेंट रु हे हला तले बॉडिंग इन हाइड्रा जो रिप्रोडक्शन बाय द बॉडिंग केमिति बुझी पाइलो हाइड्रा गोटे पेरेंट्स हाइड्रा रो गोटे बर्ड बाहला से बर्ड का डेवलप हे कि आ गोटे कंप्लीट हाइड्रा हला तब से कंप्लीट हाइड्रा रा कोन कला ना त हाइड्रा हला पुनी से हाइड्रा पुनी गोटे ही जो पेरेंट हाइड्रा बडी सेला परे से पुनी एगुडा बॉडी इन हाइड्रा प्रोसेस रे आउरी हाइड्रा गुडी को रिप्रोडक्शन करिवो एगुडा करी कि से हाइड्रा रो स्पेसिस टा अर्थ रे कोन हबो कंटिन्यूटी हबो then the letter of body in hydra is similarly regeneration. Regeneration is a type of asexual reproduction which is shown by planaria. Planaria. Regeneration के शो करते planaria. देखिए देखो ये जो planaria रहती यार बॉडी टा कोन हो ग्रो होला परे तापर सेवरल पीसेस हे आगे गोटे फिगर करसन ता देखो तापर ठीक कोन हो सेवरल पीसेस रे कट हे गेला एले जो कंप्लीट बॉडी टा कोन हे गेला गेट्स कट इनटू पीसेस खंड खंड हे गेला ए जो बॉडी पार्ट टा प्लानेरिया रे कोन हेला पीसेस रे कन्वर्ट हे गेला खंड खंड हे गेला तापर से गुडे कोन करबे एई पार्ट गुडे कंप्लीटली प्लानेरिया हे यही पार्ट टा बॉडी की सेम गोटे कंप्लीट प्लानेरिया है जो यही पार्ट टा भी बॉडी की ग्रो है कि सेम गोटे कंप्लीटली प्लानेरिया है देखो तले एठी गोटे पेरेंट एटा थिला पेरेंट प्लानेरिया थिला ये कौन हला ना कट पीसेस हे गेला कट पीसेस तीन खंड हे गेला ये तीन खंड ये पीसेस रीजेनरेट हला आ गोटे सेटर तयारी हला से जो कट पीसेस जो फ्रैगमेंटेशन हे छी बॉडी सेगमेंटेड हे छी से सेगमेंटेड पार्ट टू आ गोटे न्यू इंडिविजुअल तयारी छी रीजेनरेट करछन एई जो कट पीसेस छी एई पार्ट टू आ गोटे न्यू प्लानेरिया हला एई कट पीस रो आ गोटे न्यू प्लानेरिया प्रोड्यूस हला एई कट पीस रो आ गोटे न्यू प्लानेरिया प्रोड्यूस हला regenerate. So this process is known as regeneration. So in this case, planaria reproduce asexually by the process of regeneration. Yeah, parent planaria which gets cut into several pieces, and each pieces produce
new individual, and these cod pieces produce this new individual planaria, and these cod pieces produce this planaria. These new individuals are produced from the cod pieces of the parents. ये जो parent रहला, parent रे जो cod pieces रहला, सेही तारू ए माने regenerate हेचन. आउ थरे इटु नुआ नुआ तयारी हेचन. तले new individuals by the regeneration is a process where new individuals are produced from the cod pieces of parent cell. Parent cell ର जो cod pieces रहला सेही थारू ए माने प्रोड्यूस हेचन organism मान ताकू कहते regeneration. Then again आउ थोड़ा तुमको स्कीमेटिकली कहि दूची जा पढ़ाई छी फास्ट रू तापर नेक्स्ट क्लास रे तबे कंटिन्यू करिवा. देखो आज पढ़ितले रिप्रोडक्शन को. Reproduction is a process where living organisms, where new individuals or new organisms are produced from existing organism or from parents. There are two types of reproduction, one asexual reproduction and one sexual reproduction. Asexual reproduction the living or the new organisms or offsprings are produced from a single parent. Single parent means only a parent or only a single parent without involvement of sex cells. जो reproduction में sex cell present न था, माने male और female present न था, केवल गोटे parent cell involved था, ताकू कहते asexual reproduction. Sexual now a new individual is produced from two parents. From two parents means where both sex cells are present but both sex cells are involved, means two parents of different sex are involved, male and female. In asexual reproduction, unicellular organisms like some simple plants, animals, bacteria, other microorganisms show asexual reproduction. Also some multicellular plants like bryophyllum plant and rose plant which show asexual reproduction by vegetative propagation. And sexual reproduction, the both parents have the organs to produce. Male parents produce male gamete and female parents produce female gamete. Then these gametes fertilize to form zygote. Then this zygote grows into an organism. Rala sexual reproduction. Yes, sexual reproduction में कौन करती? ना like unicellular like amoeba, paramecium and leishmania. तमाने करती fission process रे. आउ गोटे fission तो करे plasmodium. से करे multiple fission, ए माने करती binary fission. आउ किछि करती budding process रे like hydra and yeast. आउ किछि regeneration करते like planaria. हला आउ जो other process रही जे asexual reproduction the spore formation आउ fragmentation से गुडी का सब नेक्स्ट क्लास रे पढिबे.